नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द एंटायर टीम ऑफ द वेरी इंट्रीगिंग मोनिका ओ माय डार्लिंग। जी हाँ, ये बड़ी नवंबर रिलीज है नेटफ्लिक्स पर और हुमा कुरैशी, राजकुमार राव, राधिका आप्टे और वसंत बाला, सबका स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। थैंक यू सो मच। पहले तो टाइटल बहुत ही इंट्रीगिंग है, तो मैं आपसे पूछूंगा कैप्टन ऑफ द शिप से कि ये रखा कैसे? ये इसका नामकरण श्रीराम राघवन ने किया है। अच्छा। और उन्होंने नामकरण कर दिया तो बस बोल दिया तो बोल दिया। बोल दिया तो बोल दिया। तो गाना भी है, हम थोड़ी सी झलक देख पा रहे हैं। हुमा कहीं डांस कर रही हैं, क्या इसी गाने पे डांस कर रही हैं? नो 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 नो, वो पाप हमने नहीं किया है। अच्छा। जो ओरिजिनल है उसको हमने फिल्म के जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया है। सो दैट रेफरेंस हैज बीन गिवन टू दैट सॉन्ग। वी हैवंट टैम्पर्ड विद इट। ने कहा है कि व्हाई डोंट डायरेक्टर्स गिव मी डांसिंग रोल्स। हाँ यार, मुझे तो बहुत मजा आता है डांस करने में। और हम लोग जब भी कोई प्राइवेट फंक्शन होता है, पार्टी होती है, तो आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू बी डांसिंग। सो आई रियली एंजॉय इट। और हम लोग 90s किड्स हैं, तो 90s का सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, तो आई रियली एंजॉय इट। बट आई हैव नॉट डन एज मच ऑफ द डांसिंग थिंग इन। पर इत्तेफाक की बात है, इसी साल में आपने ये मोनिका ओ माय डार्लिंग टाइटल वाली फिल्म कर ली और गंगूबाई में भी क्या गाना था। या सो आई थिंक दिस इज अ गुड ईयर फॉर मी। करेक्ट। सो होपफुली थैंक्स टू ऑल माय बोथ माय डायरेक्टर्स, संजय सर एंड वासंत सर। बाप रे, मतलब ये जो नाम एक साथ लिया जाएगा फॉर व्हाटएवर रीजन। व्हाई नॉट? नचाया तो है आपने मुझे। व्हाई नॉट जी। फिल्म पे मैं आऊंगा, पर उससे पहले क्योंकि सेट ऐसा है, तो क्या स्नेक्स और लैडर्स खेले हैं आप लोगों ने? डिड यू एंजॉय? बहुत खेला है। 98 में उतरने के बाद गेम को मतलब तहस नहस कर दिया है। रोया है, सब कुछ हुआ है। ओके। हुमा, कमिंग टू द फिल्म नाउ, टेल अस अ बिट अबाउट योर रोल। और जब कहानी आपके पास आई तो आपकी क्या वजह थी हाँ कहने की? I mean, Vasan, I've known Vasan since Gangs of Wasseypur, and of course Raj is a very dear friend, and Radhika as well. So I knew Vasan was making this film, and I had gone to meet Shriram for something else. And वहाँ पे Vasan थे, तो मैं Vasan के पास गई, मैंने बोला अरे आप पिक्चर बना रहे हो, why are you not offering it to me? तो ही से अरे मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ कास्टिंग भी लॉक नहीं हुआ है, whatever. And I think 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुला के फिर एक नरेशन दिया, and I was absolutely floored. And of course I knew Raj was on board because although it's called Monica, my darling, but I think it's a very pure ensemble film. हम सबके ही किरदार बहुत important है. Monica, yes, is a conflict point of the film, but I can't say कि मतलब this is my film or this one film or that one film. It's a very beautiful ensemble film where everybody is deliciously dark. सबका एक conflict point है. सब जो दिखते हैं वैसे है नहीं, तो मुझे ये इसकी चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। राजकुमार, आपकी रणनीति क्या थी इस कहानी को हाँ बोलने से पहले? रणनीति गलत शब्द है शायद। एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ, आजकल इलेक्शन सीजन है तो इस वजह से निकल जाता है। मगर आपकी वजह क्या थी? और टेल अस अ बिट मोर अबाउट योर कैरेक्टर व्हिच इज वेरी सेंट्रल टू दिस हू डन इट। So I play this IT guy called Jayant Arkhedkar, and he's somebody who's very aspirational. He's come from a small town and wants to make it big in this big world, in this big city with these really cool people. He wants to be one of them. And for the reason for me to say yes was purely the script and to get a chance to work with Vasant Bala. And when I got to know these two are there and Sikandar and such great actors in the film, it was a no-brainer for me. I always wanted to work with Radhika. I think, and not only me, a lot of people told me earlier, okay, why don't you guys work together? And Huma, I've worked with her briefly in Wasseypur, but again, huge respect for her, and she's a dear friend. So when you work with friends and it's a lot of fun. There's no pressure, there's no hierarchy there. I think everybody's just going there to give it the best shot and just have fun. Radhika, same question goes to you. और इस genre के साथ क्या आपका कनेक्ट है? आपको लगता है काफी इस genre में आप अच्छी फिल्में कर चुकी हैं? Do you enjoy watching this genre in real life as well? I love thrillers, I love comedy as well, but it wasn't a choice. I didn't choose these films actually thinking about the genre. They came to me. I like the scripts, I like the people attached to it, and that's always been the reason to choose these films. इसका जो sequel होगा वो flashback और sequel मतलब साथ में करके हम दोनों मतलब ऐसे हम दोनों मजाक कर रही हूँ यार। पर नहीं पर actually राज के साथ मुझे कब से काम करना था। Same thing, I used to be like, and so I'm very glad, but it's too brief. I hope that it is a longer opportunity, like longer. जी, अपने किरदार के बारे में कुछ भी बताएं कि
अद्भुत क्या है इस रोल के बारे में? मैं इंस्पेक्टर नायडू जी। का किरदार निभा रही हूँ। फ्रॉम अ लॉयर टू एन इंस्पेक्टर। जी जी जी, पर मतलब बहुत ही मतलब करप्ट और शेमलेसली करप्ट, पर क्वाइट ब्राइट, वेरी ब्राइट एक्चुअली, वेरी ब्राइट। एंड शी इतना मतलब मजेदार कैरेक्टर है, इतना मतलब जो किरदार है वो मैं सब जो भी मैं नहीं हूँ एक्चुअली वो किरदार है। तो मुझे बहुत मजा आया सब वो दैट टू एक्सप्लोर दैट। एंड ऑल्सो I've never done comedy on screen before. It's not like a ha-ha comedy, but it's quite she's enjoying the whole dealing with people and how she and enjoying her authority. राज, मैंने एक और आपका कोट पढ़ा था कि शुरुआत में हीरो रोल्स नहीं मिले राजकुमार राव को, क्यों आपको ऐसे लगता है, क्यों नहीं? No, एक तो I don't use the term hero. I said lead roles. But नहीं hero मिले बना मतलब दिया। नहीं, ऑडिशन नहीं लेते थे, like but that's okay, I understand. I think सबका एक होता है कि वो whether you fit in that part or not. But they never used to audition me. Very rarely somebody, actually no, they never used to audition me for the lead parts. It was mostly about friend's part or some secondary casting. Yeah. क्या उसका असर होता था आपको? Did you? नहीं, I'm a very positive guy. I never used to take it to my heart. I was like, ठीक है, if you don't think that I fit in for this, I'm sure there's something somewhere waiting for me. And then क्या आपको लगता है अब क्योंकि OTT का एडवेंट आ गया है, like she was saying about the thriller genre and the impact of OTT on that, आपको लगता है OTT has changed the deal for new actors entering as well? It has opened so many avenues for some really talented actors who were equally talented at that time also when they started out, but were not getting enough opportunities. And thanks to streaming platforms, they are getting enough work and they are shining with their craft, like Jaideep Ahlawat to name some, and Pratik Gandhi, Vijay Verma. So I'm glad it's happening because we need more and more talent in our industry. आपको लगता है ये भी इज अ गुड सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट राधिका की थिएटर्स भी खुल गए हैं धड़ाधड़, वहां भी रिलीजेस आ रही हैं हर फ्राइडे, अभी XXL आई हुमा कुरैशी की, आपकी विक्रम वेदा भी आई थी अभी आई थिंक 6 weeks ago, पर डिस्पाइट दैट OTT releases are also continuing. So the two mediums, this big question that was arising 1.5 years back कि क्या coexistence हो सकता है, it's been proven कि हो सकता है. I think of course हो सकता है, they have their own place in this whole Sorry, just to add to that, I want to add something to that. It's like saying कि अगर आपके पास रेस्टोरेंट जाने का ऑप्शन है तो आप घर पे फूड ऑर्डर नहीं करोगे. Correct. I think आप दोनों करते हो और दोनों एक्सपीरियंसेस अलग-अलग रीजंस की वजह से एंजॉय करते हो. Actually, it's And a the very same- good analogy. Yeah. कि I want to go out for a birthday or a celebration and I want to enjoy a meal with my loved ones and I also want the comfort of my house. Order किया, TV देखा, वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है. So both can coexist. विक्रम वेदा पे पूछूंगा कि कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके लिए, as you said it was a short role but impact हुआ है, you wanted to work with the directors, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक सिंगल स्क्रीन पे देखी थी ये फिल्म इत्तेफाक से, और क्या रिस्पॉन्स था वहाँ, सीटियाँ बज रही थी और आपके लिए, आपके डायलॉग्स के लिए भी बहुत तालियां बजी हैं उस फिल्म में जब आप सैफ को बोलते हो एंड व्हाट नॉट. So experience of that, response of that. Thank you very much. I'll just keep it brief, but thank you very much. I think इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट कभी मैं थी नहीं, तो just the madness and the fans and everything. I mean, just to watch that was quite an experience, and I enjoyed it. Also, I really enjoyed working with the actors and the directors. What they had to say in the film was something that I strongly believe. So that was really. I'm so grateful. I really enjoyed that. Okay. And since we're meeting for the first time after your film has also released, तो कैसा response रहा है XXL का? Do you believe that the message you were trying to send has कहीं ना कहीं reached the audiences through the reactions, the responses, the reviews you've seen? But we had a lot of people have come to me and they've said that they identify with the story, that they have also faced body shaming at some level, and the idea was to I guess emotionally appeal to a lot of people. So yeah, I mean now, like I said, the film is out there. It's up for the public to decide, whether they resonate with it or not. But I think the objective of what we wanted to say with the film, I think that we have done. So. चलिए लास्ट वर्ड, क्योंकि फिल्म का नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग, तो मैं एंड करूंगा राजकुमार और वसंत के संग. टिपिकल सवाल, फिल्म तो है मोनिका ओ माय डार्लिंग, असल जिंदगी में आपकी डार्लिंग कौन है? आप दोनों. Can we answer for each other? It all, I think because the both starts with P. Yeah. Prerna for him. Yeah. And my daughter Saiba. Saiba. And for me. पत्र लेगा. Thank you all so much for joining us, and now it's over to the darlings, the audience.
to appreciate your labor of Yes, love. So yes. शुभकामनाएं आप दोनों को, and let's hope that people watch it and really appreciate your work. Thank you.